So welcome guys, after a long time I'm making video on my trading. So this video is in Hindi or English, in both languages. Okay, so let's analyze the pair and do some trades. So आप दोस्तों सभी का स्वागत है और काफ़ी समय बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसी में बिजी था काफ़ी ज़्यादा अपने कामों में। तो गाइस ये देखिए मेरा लाइव अकाउंट है कोडेक्स का और ये मार्केट है। तो ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ट्रेड्स लेते हैं इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे स्टार्ट। तो ये भी कुछ लाइक एक न्यू टाइप मार्केट है, ट्रेंड नहीं है मार्केट में कोई लाइक। नो यूरो USD like uptrend, minor down. So let's see if I'll get any good opportunity. Okay, so I think here buyers will enter. Let's unlock another pair. Let's see, here's also buyer center after long bearish trend. So guys, like these are my trades are based on like price action plus candle psychology and my tricks and also my knowledge experience. तो ये दिस ट्रेड ऑलरेडी विन, तो ये वाली ट्रेड हम जीत चुके हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी। Why I took this trade? Because you will see this after bearish trend, here is buyer's enter, but after again seller's entry. After seller's entry again buyers enter, so that means buyers want to move again upper side, reach this level. Wait, show you. Buyers wants to reach this level. Here is the level, and this is also like B type pattern. So here is like minor level, so that's why we can see rejection. That's why I don't want to enter here. Always trade when you have confident. तभी ट्रेड कीजिए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो। ऐसे बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। See here, I'm making bearish candle. Yeah, I'm breaking level. No. तो कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इसमें हमारे को मिलती है तो
मार्केट अभी मार्केट मूवमेंट मेरे को कुछ इतनी सही लग नहीं रही है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं इसी टाइम ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे को टाइम लगता नहीं है। बेरिश कैट always find best opportunity, because this is a market and binary market is very risky. You have to predict a candle in a specific time, so this is like very tough. Okay, so second trade win. Okay, see, sell up candle. So this is a continuation sign, but this continuation sign will not work in downtrend, because see, here is a downtrend, so continuation sign will not work against that end. And also I have some candle psychology knowledge, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे डाउनट्रेंड में काम नहीं करेगा कंडीशन साइन। तो प्रीवियस कैंडल तो काफ़ी बड़ी है एज पर बोलिंग के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन डाउनट्रेंड में नहीं काम नहीं करेगी। उसमें एक टिक भी है, इसमें रिवर्स हो जाता है। तो देखो देखो देखो, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है इस लेवल को, ये देखिए, ट्राई टू ब्रेकिंग दिस लेवल कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन बाइंडिंग में आपको कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि 1 मिनट में ट्रेड करनी है, कहाँ पे रिवर्सल हो जाए। ओके ओके, मिस द अपॉर्चुनिटी, अभी तो काफ़ी लेट हो गया। So let's find another मार्केट फॉलिंग। आई थिंक कोई न्यूज़ वगैरह हो सकती है, माइट बी देयर इज एनी न्यूज़, सो आई डू नॉट ट्रेड ऑन न्यूज़, because in the time of news market, like volatile market, fully volatile, and you will lose. Okay. Let's see market movement. No, I'm finding good entry point. No, market reverse. So there is no worry, you have to wait for specific entry point, because entry point is very important in binary trading. So you will find many opportunities, don't worry, but you can always think about your entry point, because the entry point can play very big role in your winning or losing. Okay, let's see.
went here for okay, went here for call. Let's see. See here, see this. Why I'm waiting for my entry point? Why? You can see here is a red candle, but due to my entry point I won the stage. So you can see this is effect of entry point. आप देख सकते हो ये एंट्री पॉइंट का इफेक्ट कि यहाँ पे सेलर की कैंडल बनी और मैं फिर विन कर गया. तो ऑलवेज बी पेशेंस. So guys, I already won 3 trades. Okay, let me see if I'll get any good entry point. I will trade for next, or otherwise I will stop trading. So here is also a reason. Market at least go to this level, go this candle to cover this candle, but market didn't want this level. That's why, because market is not following, I think, now rules. I'm trading on my experience. So this should be a green candle. This should be definitely green candle. After this green candle, you can expect seller's candle. But I don't know why these two are like seller's candle, and after that I think might be this is green candle. I don't know why. Market is not following any rules according to me. Okay, so this can be a green candle or red candle, because you can see there is a level, but I think this should be a green, I think so. No movement, no, I didn't got any good movement.